Hi, hello everyone. Welcome back to classes. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important topic of chemistry, that is property of acid and base. But what are the property of acid and base? Of acid and base. At the previous lecture we have discussed different theory about acid and base, Arrhenius concept, Lowry-Bronsted concept and Lewis concept. According to Arrhenius concept, all those substances acid which donate proton in aqueous solution and all those are base which donate hydroxyl ion in aqueous solution. But according to Lowry and Bronsted concept, all those substances called acids which donate a proton and all those are base which accept a proton. And according to Lewis concept, all those substances are acids which accept a lone pair of electron and all those are base which donates a lone pair of electron, and as a result a coordinate covalent bond is formed, which is a product called adduct. But today we will discuss the property of acid and base. You know there are two types of property. One is a physical property, another is a chemical property. Physical property and chemical property. Physical property we have already discussed of the acid as well as a base, physical property. But today we will discuss only chemical property of acid, which is also called chemical reaction of acid. First of all, we focus on property of acid only. Then on next lecture we will discuss a property of the base. Two types of the property of the acid, one is physical property, another is chemical property. Physical property of the acid we have already discussed on lecture number first at the starting of the chapter. You know that the acids are corrosive in nature, they have sour in taste and so on. But today we will only focus on chemical property of the acid, केमिकल रिएक्शन ऑफ द एसिड्स. देखिए वीवर्स, एसिड्स के बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी हो सकते हैं, लेकिन हमने वन बाय वन देखना है कि कौन से केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड्स पॉसिबल है. जो पहला प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड्स है दैट इज रिएक्शन विथ मेटल. याद रखिए कोई भी एसिड्स हो वो मेटल के साथ डायरेक्टली रिएक्शन कर लेता है. मेटल के साथ एसिड्स का रिएक्शन पॉसिबल है. किस तरह मेटल के साथ एसिड्स रिएक्शन पॉसिबल है? लाइक फॉर एग्जांपल कोई एक मेटल्स दे दें, उसके साथ एसिड की रिएक्शन कर लेते हैं. दैट इज सपोज जिंक. जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ दैट इज एसिड मिलता है, so they will produce zinc sulfate plus H2O. Whenever zinc react with sulfuric acid, they will produce zinc sulfate plus H2. And H2 is what? That is gas. So one of the chemical property of the acid named as sulfuric acid react with metal, that is zinc, so they produce zinc sulfate plus H2 gas is evolved. इसी तरह अगर हम कोई और मेटल ले लें, लाइक फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, अगर सपोज हम एक और
मेटल ले ले, दैट इज सपोज एल्यूमिनियम, इसको अगर रिएक्ट करवा दे HCl के साथ, सो दे विल प्रोड्यूस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2 गैस, दैट इज evolved. रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस के लिए सपोज HCl के साथ यहाँ पे 6 लिख दें, 6, और एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पे 2 लिख दें, so here also 2. Okay, that is also gas, so the gas is evolved. So very important MCQs कि whenever acid react with metal they evolve dash gas. तो कोई गैस, कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस. सो हमेशा याद रखें जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर लेता है, सो हाइड्रोजन गैस इज evolved. So the first chemical property of the acid, that is reaction with metal, zinc is metal, aluminium is metal, and remember they are very highly reactive metal, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और जिस एसिड के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं द एसिड इज डाइल्यूट, सो जो रिएक्शन होगा जारी बात है वो फिर मॉडरेट होगा. अगर ये कंसंट्रेटेड हो जाए तो फिर रिएक्शन इज वेरी फास्ट. मॉडरेट एसिड रिएक्ट विद हाईली रिएक्टिव मेटल, so the reaction will be moderate, so hydrogen gas is evolved. So the first chemical property of the acid, that is reaction with metal, reaction with metal. Second property of the acid, that is reaction with carbonate and bicarbonate. एसिड जो है वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम किसी मेटल का कार्बोनेट ले ले, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, रिएक्ट विद HCl, so they will produce calcium chloride, carbon dioxide plus H2O. H2O in the liquid, carbon dioxide in the gaseous, and calcium chloride, they are solid. So whenever calcium carbonate react with the HCl and they produce calcium chloride, carbon dioxide and water. रिएक्शन जो है वो मुझे बैलेंस नहीं लग रहा क्योंकि क्लोरीन हेयर 1 and here 2, हाइड्रोजन 2 here 1, so अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें, so now the reaction is what? The reaction is balanced. So another chemical property of the acid, that is with carbonate, that is with carbonate. इसी तरह अगर हम बाइकार्बोनेट ले लें, लाइक फॉर एग्जांपल किसी मेटल का बाइकार्बोनेट ले लें, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, react with acid, the name of acid sulfuric acid, so they will produce sodium sulfate plus sulfur dioxide, carbon dioxide plus H2O. So that is bicarbonate and that is carbonate of the metal, react with acid HCl plus H2SO4. The reaction is not balanced, so यहाँ पे आप 2 लिख दें. So अब जो रिएक्शन है वो बैलेंस हुआ, लेकिन हाइड्रोजन 2 + 2 4, so यहाँ पे आप 2 लिख दें, 2H2O plus carbon dioxide, so the reaction is balanced now. Okay. So another chemical property of the acid, that is with carbonate, reaction with carbonate and bicarbonate. So very important MCQs कि whenever acid react with carbonate or bicarbonate, dash gas is evolved. कौन सा गैस जो है वो खारिज होता है, evolved होता है. So remember the gas is carbon dioxide. The gas is carbon dioxide.
मतलब जब एसिड जो है वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं सो हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व, लेकिन जब वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट कर लेते हैं सो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इवॉल्व। वेरी इंपॉर्टेंट टू एमसीक्यूज। इसी तरह एक और भी प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड्स लिखते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ, इस चीज से जरा स्क्रीनशॉट ले ली जल्दी। ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड दैट इज रिएक्शन विथ बेस। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड दैट इज रिएक्शन विथ बेस। कोई भी बेस ले, जब आप उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर विच इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द एसिड and also very important reaction of the base, that is neutralization. What is neutralization? When acid react with base, acid react with base, so they produce salt and water. They produce salt and water. Remember, when acid react with base and produce salt and water, the name of such a reaction in chemistry called neutralization. So इसको हम neutralization reaction कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि बेस आप हमेशा NaOH लेंगे, बेस आप कोई भी ले सकते हैं। जैसा कि इधर आपने बेस NaOH लिया है, आप बेस जो है कॉपर ऑक्साइड भी ले सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड। इसको जब आप किसी एसिड्स के साथ रिएक्ट कर लेंगे, किसी भी एसिड्स के साथ, दैट इज सपोज HCl, so another acid is sulfuric acid, so they will produce copper sulfate plus H2O. So that is also neutralization called. So wherever acid react with base and produce salt in water, the name of such a reaction of the acid plus base, that is known as neutralization reaction. So one of the chemical property of the acid, very important, that is reaction with base. So acid reaction with base. बात समझ आ रही है ना सबको? इसके अलावा इस चीज़ से ज़रा स्क्रीनशॉट ले मिटा रहा हूँ। इसके अलावा one of the chemical property of the acid, that is reaction with sulfides. Sulfides, suppose अगर आयरन सल्फाइड्स को हम एसिड्स के साथ मिलाएं, that is sulfuric acid, when iron sulfides combined with acid, that is sulfuric acid, so iron sulfate FeSO4, iron sulfate plus H2S, that is hydrogen sulfide, that is a gas, so they are evolved. So very important MCQs, कि whenever acids react with the sulfides, so कौन सा गैस इवॉल्व होता है? सो रिमेंबर द गैस इज H2S। देखें ना, एसिड जब रिएक्शन करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के साथ तो 3 गैसेस खारिज होते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड, या H2, या सल्फर डाइऑक्साइड, और या हाइड्रोजन सल्फाइड, 4 गैसेस। तो आयरन सल्फाइड के साथ जब रिएक्ट करेगा, सो रिमेंबर ऑलवेज evolve H2S gas. So that is one of the chemical property of the acid with iron sulfide, that is iron sulfide, FeS. So very simple reaction. ये जो blue marker से लेकर इनको आपस में मिलाया और red वाले को आपस में मिलाया, so the reaction is complete. So iron sulfide plus H2S. So here also HCl with NaOH. So when sodium combined with chlorine and hydrogen combined with OH, so they will produce NaCl plus water. So CuO
and H2SO4. So copper sulfate के साथ और H2O आपस में मिल जाएगा. So that is all about the reaction. So one of the last reaction of the acid, one of the last chemical property of the acid, that is, इस चीज़ से ज़रा screenshot ले ले. Okay. So another important reaction of the acid, that is known as reaction with. यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को रिएक्शन लिखा था, रिएक्शन विद बेस, इस रिएक्शन का नाम ज़रूर याद रखना. द नेम ऑफ सच रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन. इस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन है. ये नाम ज़रूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन, आपने कहना है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट इन वाटर, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. सो वन ऑफ द लास्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद sulfides and bisulfides. Sulfides and bisulfides. When calcium sulfides react with acid, you know there are two acids react here. One is sulfuric acid, another is HCl. So now HCl, so they will produce what? Calcium chloride plus H2O and plus sulfur dioxide gas, that is calcium sulfide, react with acid and they produce that and that. इसी तरह अगर bisulfide आप ले ले, bisulfide, that is like sodium bisulfide, and they react with acid. The acid is anyone, that is suppose HCl. So what will produce? Sodium chloride, again H2O and again SO2 gas is evolved. So that is sulfides and that is bisulfides. One is sulfides, another is bisulfides. Acid react with sulfides, acid react with bisulfides, and they evolved a gas named as SO2 gas. So that is all about the chemical property of the acid, which is also called the chemical reaction of the acid. That is reaction with metal, reaction with carbonate and bicarbonates, reaction with sulfides, reaction with sulfates and bisulfates, and last reaction with base. Acid react with base. The name of such a reaction is known as neutralization reaction, which is very, very important. So thank you very much for watching this video.